Today in this lecture we will learn about what is pointer. Sometimes the student think about that the pointer concept is very complex in nature, but no. पॉइंटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कहा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही मुश्किल है. अगर एक बार पॉइंटर समझ में आ जाए तो यू कैन यूज़ दैट पॉइंटर टू बिल्ड मैनी एप्लीकेशंस, many projects. Even you can use in the dynamic memory allocation. You can also use in the case of your projects which are based on the pointers. So pointer की help से we can make the number of applications. So what is the pointer here? So first of all, pointer होता क्या है? Pointer is nothing just like a normal variable. Now what is a variable? Variable is a name given to some memory location. When we give a name to a location, then it becomes a variable. So variable, जब हम एक memory location को एक नाम दे देते हैं तो हम उसे एक variable बोल देते हैं. Now how we declare the variable? Variable declare करने के लिए first of all we need to use the data type. In my case I am using the type is integer. Then I can give the any name. So I'm just going to use the name is like a. So this is the a is the variable. यहाँ पे a एक variable है जिसकी type क्या है, integer है. जब हम कोई भी variable create करते हैं, ये एक space लेता है memory के अंदर, और उस memory का कोई ना कोई location होता है, कोई address होता है. वो address कौन store करता है? That is stored by the pointer variable. So what is the pointer? Pointer is the special kind of a variable which stores the address of another variable. So जैसे हमने एक variable बनाया है यहाँ पे integer a, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, तो हम पहले वो देख लेते हैं. सबसे पहले हमने डेटा टाइप लिया, देन आई एम गोइंग टू यूज दिस स्टार ptr. सो दिस ptr इज द पॉइंटर वेरिएबल दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, और हमारे केस में अनदर वेरिएबल कौन सा है, a. नाउ कैसे स्टोर करेगा? ptr जो है एक वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ a. So this address of a is storing into this special variable which is the pointer variable. So this is called a pointer. So जब हम pointer की बात करते हैं तो pointer एक special variable होता है जो store करता है एक another variable का address. उस एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टोर दैट एड्रेस इनटू ए अनदर वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल. इसको हम एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कोड ब्लॉक्स के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सेव दिस फाइल इनटू द सी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट ऑन टू डेस्कटॉप. देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इंक्लूड द हेडर फाइल. Hash include stdio.h, then hash include conio.h, then I'm going to take the main function. So this is your void main. In this main function पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा इंटीजर i, और उसको कोई वैल्यू असाइन करूँगा i इक्वल टू लाइक 5. Now if I want to print the address of this variable, how can I print? We use the ampersand operator. So with the help of ampersand operator we can print the address of this I. So this is your address of I equal to percentage of u. यहाँ पे जो हम स्पेशल जो फॉर्मेट स्पेसिफायर ले रहे हैं वो स्पेशल स्पेसिफायर कौन सा है, परसेंटेज यू. u क्या होता है, दैट इज योर अनसाइंड इंटीजर. अगर आप किसी भी एड्रेस को प्रिंट कराना चाहते हो स्क्रीन के ऊपर तो यू कैन ओनली बी प्रिंट यूजिंग द स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज योर परसेंटेज u.
because the address can never be a negative number, so that is always be a positive number. So we are taking here the percentage u. Then we need to print the address of the variable I, so I am using here ampersand I. So by this way we can print the address of the I variable. Now let us, we are going to execute this program. So पहले हम इसको सेव करेंगे and then we will execute it and then yes. So आप देख सकते हो जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो एक एड्रेस ऑफ आई इसने प्रिंट किया, एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू 64222300। इसका मतलब ये है कि जो आई जो है एक नॉर्मल वेरिएबल है और उसका कोई ना कोई एड्रेस है, उस एड्रेस को हमने कहाँ पे स्टोर किया है या कंपाइलर ने उसको कहाँ पे स्टोर किया है, उसका एड्रेस क्या है 64222300, और वो हमने किसकी हेल्प से प्रिंट कराया, विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंट आई। एम्परसेंट क्या होता है, एक स्पेशल एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है जिसका काम क्या है, जो भी आई है जो वेरिएबल है उसकी लोकेशन को बताना। सो उसकी लोकेशन को उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल वेरिएबल की बात करी। नाउ सपोज इफ यू वांट टू स्टोर दैट एड्रेस ऑफ आई इनटू सम अनदर वेरिएबल, बिकॉज ये एड्रेस भी कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा। अब उसको एड्रेस को आप स्टोर कराना चाहते हैं तो हम एक स्पेशल वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल को क्या बोलेंगे, उस वेरिएबल को हम बोलेंगे पॉइंटर वेरिएबल। सो उसको प्रिंट कराने के लिए हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्पेशल वेरिएबल इंटीजर स्टार ptr. Now this ptr can contain the address of another variable, so this ptr equal to ampersand of I, because this ampersand tell us the address of this variable I. So now the ptr is storing the address of I. Now suppose अभी तक जो हम प्रिंट करा रहे थे ampersand I की हेल्प से करा रहे थे। Now if suppose if I want to print the address of this variable I with the help of this pointer variable, I can directly display with the help of ptr. So just मुझे यहाँ पे क्या करना है, ampersand I की जगह डायरेक्टली मुझे ptr को डिस्प्ले कराना है। अब ptr क्या कंटेन कर रहा है, एड्रेस ऑफ I। तो आपने पहले प्रोग्राम को सेव करना है एंड देन जस्ट एग्जीक्यूट इट। You can see that it is also printing the address of the I, that is your same address. Now suppose if I want to print the value of I, how can I print? With the help of printf statement, then percentage %d and then comma, and then I can directly print the value of I. So it will print the value of I here. तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, दिस इज कमेंट, देन गोइंग टू रन। तो यू कैन चेक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज शोइंग द एड्रेस ऑफ आई। अभी इसने वैल्यू को प्रिंट नहीं किया है, सो हमें वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो हम एक काम करते हैं, इस फाइल को हम पहले एक जगह सेव करा लेते हैं, फाइल एंड देन सेव फाइल एज। सो हमारा ये untitled2 हो गया, untitled2 डॉट सेव, and then we can execute build and run. So आप देख सकते हो पहले i की वैल्यू को इसने प्रिंट किया है। i की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 5, and then it is printing the address of I 642226. So एक हमने सिंपल सा प्रोग्राम देखा जिसमें हमने ये देखा कि हम कैसे पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे वो पॉइंटर वेरिएबल अनदर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है और कैसे हम उस एड्रेस को हम प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल। हमारे पास एक वो वे है जिसकी हेल्प से हम पॉइंटर जो कंटेन कर रहा है एड्रेस उसको भी हम प्रिंट करा सकते हैं, या उसकी हेल्प से हम वैल्यू ऑफ आई भी प्रिंट करा सकते हैं। नाउ हाउ वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, just we need to use here, suppose I'm just going use to printf, then this is your percentage %d, then comma, because हमारे पास क्या है, एड्रेस ऑफ i, एम्परसेंट ऑफ i एड्रेस i का कंटेन कर रहा है। तो अगर हम इसके आगे अगर हम डी रेफरेंसिंग पॉइंटर का यूज करें, जब हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टार को तो इसे बोलते हैं रेफरेंसिंग
that is your pointer variable, but when we are going to use here that is called dereferencing the pointer. So here we call it as another operator that is called value at operator, value at address of I. So एड्रेस ऑफ आई के ऊपर जो वैल्यू कंटेन हो रही है वो वैल्यू कौन सी है 5. सो बाय दिस वे वी कैन आल्सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई यूजिंग द एम्परसेंट आई with the help of address of I. Now click on the save button and then build and run. So you can check that this is the printing the value of I, first of all I, then address of I it is printing. So by this way we can also print the value of I here. So ampersand I give the address of the variable I. This address can be collected in the variable by using a pointer, special pointer variable ptr. So ptr is containing the address of I, and by this pointer variable we can also print. Now जब हम ptr की help से address of I print कर रहे हैं, we can also print with the help of ptr the value of I. How we can do that? Again we need to use the percentage %d, then comma, and then we can use the value at, and then we can pass here the ptr. So this is your ptr, this is the pointer variable. यहाँ पे हम इसको ऊपर कमेंट कर देते हैं ताकि ये डबल रिपीटेड वैल्यूज को शो ना करे. देन प्रोग्राम को आपने सेव करना है, फाइल में जाना है, देन सेव फाइल एज, देन वी कैन टेक इट एज ए प्रोग्राम नंबर 3 untitled.3 and then execute it. So this is the printing the address of I firstly, but it is not printing the value of I. I need to check it out. So this is the printf %d. This is called value at star ptr. So you can see that the process return 5. So it is printing the hello value as well as process returning the 5 value, which is the value of variable I. So we have learned about what is the pointer, what is the pointer variable, how the pointer variable can store the address of the another variable, and how we declare the variable, and how we can print the value of the another variable using the pointer, and how the pointer variable store the address of the another variable, and how we can display the address of a variable I onto the screen. So thank you for attending my lecture.